Evolution is actually slow, gradual change. Slow, gradual change or modification from simple to complex. The simple modification, such change, the slow gradual change or modification from simple to complex is called as evolution. And जैसे ही modification हुआ from simple to complex, we can say descent with modification. Descent with modification. तो इवोल्यूशन को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया जाता है. डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन मतलब एवरी मॉडिफिकेशन में वो डिसेंट होता जाएगा. डिसेंट्स मतलब क्या है ना, धीरे धीरे और स्ट्रीमलाइन होता जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, परफेक्ट होता जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट टू परफेक्ट. इम्परफेक्ट टू परफेक्ट. तो ये अलग अलग वे है इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का. एंड इवोल्यूशन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक डिस्कशन करेंगे. नाउ द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज first we are going to discuss about origin of life. Origin of life. First coming to origin of life. देखिए कुछ वर्ड्स है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा. फर्स्ट इज व्हाट? द फर्स्ट इज केमोजेनी. सेकेंड इज बायोजेनी. एंड थर्ड इज कॉग्नोजेनी. लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ है, पहले लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो केमिकल फॉर्म में है. So that is what is called as what ना, केमोजेनी. So केमोजेनी का मतलब क्या है? Formation and modification of chemicals. Formation and modification or evolution of chemicals. पहले इवोल्यूशन हुआ है कि पहले लाइफ ओरिजिन हुआ है? पहले लाइफ ओरिजिन हुआ है. जो फर्स्ट लाइफ था वो सिंपल लाइफ था कि कॉम्प्लेक्स लाइफ? सिंपल लाइफ. अगर सिंपल लाइफ की बात करें तो पहले प्रोकैरियोट था कि पहले यूकैरियोटिक था? फर्स्ट इज प्रोकैरियोट. तो फर्स्ट सेल है कि पहले फर्स्ट केमिकल है? सेल इज मेड अप ऑफ केमिकल्स, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स. Carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. These are the four complex chemical which together to form the cell. The first chemical formation हुआ है, chemical का evolution हुआ है simple to complex, that is inorganic chemical to organic chemical. Then that organic chemical or complex chemical to form the first cell, means first life. Life सिर्फ एक बार फॉर्म हुआ है, आज तक कभी लाइफ दोबारा फॉर्म नहीं हुआ है. लाइफ का मॉडिफिकेशन हुआ है. एंड दैट मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज व्हाट ना, कॉग्नोजेनी. तो फर्स्ट इज व्हाट? फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन और इवोल्यूशन ऑफ केमिकल्स, दैट इज इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक.
मीन्स इवोल्यूशन में लिखा मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. बायोजेनी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लाइफ. The formation of first life, that is biogeny. And cognogeny means modification of life. And इसी को हम लोग बोलते हैं क्या ना evolution. So the modification of life forms is called as evolution or evolution of life. So this is called as cognogeny. तो हम लोग इस चैप्टर में ये तीनों चीज पढ़ेंगे. ऑरिजिन ऑफ लाइफ के अंडर फर्स्ट आते हैं केमोजेनी, देन बायोजेनी, देन कॉग्नोजेनी. मैं यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आता है. व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? नाम तो सुने. बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन क्या करता है? द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, evolution of life, or the formation of universe. What actually the explanation given by the Big Bang theory? Explanation for the origin of universe. So Big Bang theory does not explaining the origin of life or modification of life. Big Bang theory origin of universe के साथ related है. And what is a Big Bang? Big Bang का मतलब है a huge explosion. A huge explosion takes place. A huge explosion takes place approximately 20 billion years ago. Twenty into 10 to the power 9. A huge explosion takes place. अच्छा, explosion होगा तो उसके वजह से क्या होगा? एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा? एक्सपेंशन. The huge explosion takes place, that is 20 billion years ago, leads to expansion of universe. एंड टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा कि नहीं? आपको पता है ये जो एक्सपेंशन, ये जो ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, इसको हम अपने फिजिकल टर्म में हम इसको बिल्कुल भी आपको बोल नहीं सकते कि उसका इंटेंसिटी क्या था, इसका फोर्स क्या था, इसका स्ट्रेंथ कितना था. इट इज अनइमेजिनेबल. You just can't imagine how the huge explosion takes place. And जिस explosion का impact अभी भी है. In the today conditions, we can also say that the universe is again expanding. तब से लेके आज तक यूनिवर्स एक्सपैंड कर ही रहा है. अब सोचिए कितना बड़ा एक्सप्लोजन होगा. एंड उस एक्सपेंशन की वजह से आज भी टेम्परेचर और कम हो रहा है. हम लोग स्पेस में जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, वेरी लो टेम्परेचर. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस एक्सप्लोजन एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स. तो यूनिवर्स कितना बड़ा है हम लोग अपने दिमाग में तो बिल्कुल ही सोच नहीं सकते. हाउ इट इज बिग. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इट इज बिगर एंड बिगर डे बाय डे, और भी बढ़ता जा रहा है. So expansion of universe, temperature goes down, and formation of हम लोग का जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. आकार गंगा बोलते हैं ना उसको. एंड सोलर सिस्टम.
including Earth. The question देगा which of the following theory is odd with respect to origin of life. बहुत सारा नाम दिया होगा, बिग बैंग भी दिया होगा. तो बिग बैंग इज नॉट explanation for the origin of life. It is the explanation for the origin of universe. ये है क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है origin of earth. Origin of first life. Origin of non-cellular form of life. इसका जो हम लिखेंगे तो वही इंपॉर्टेंट है. Origin of first cellular form of life. Origin of photosynthetic cyanobacteria. That is prokaryotic cyanobacteria. And origin of eukaryotes, or we can say the free living in the ocean. तो origin of earth कब हुआ था ना 4.5 billion years ago. 4.5 billion years ago मतलब 4,500 million years ago. ठीक है. फर्स्ट लाइफ कब हुआ ना that is 4 billion years ago or 4,000 million years ago. इसको प्रैक्टिकली हम लोग क्या बोलते हैं ना 3.9. एग्जैक्टली 4 तो नहीं है, हम बोल सकते हैं कि 3.9 बिलियन ईयर्स एगो. तो गैप कितना है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, दोनों के बीच में गैप कितना हो गया ना 500 मिलियन ईयर्स. तो समझिए सोचिए कि 500 मिलियन ईयर्स का गैप क्यों हुआ ना, बिकॉज द कंडीशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ इज नॉट फेवरेबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो फेवरेबल होने में 500 मिलियन ईयर्स लग गए, 500 मिलियन ईयर्स. एंड द फर्स्ट द ओरिजिन ऑफ नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ. ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में कौन कौन आ जाएगा ना, सपोज टू बी आरएनए, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये पॉलीसेकेराइड, आरएनए, प्रोटीन, ये सब पॉलीमर है कि नहीं. इनका भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना, तो मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है तो लाइफ है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, फर्स्ट नॉन सेलुलर, बिकॉज दीज आर नॉट सेल, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ. फर्स्ट इट इज टेक्स प्लेस इन द 3 billion years ago. Next is for cellular form of life.
and that is 2 billion years ago. And origin of the photosynthetic cyanobacteria, that is a type of prokaryote. It is to be formed approximately 3.3 to 3.5 billion years ago. मैं खाली बिलियंस में लिख रहा हूं, आप लोग चाहे तो मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे कि यहाँ पे 300 3300 टू 3500 मिलियन ईयर्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 3 बिलियन मतलब 3000 मिलियन ईयर, 2 बिलियन मतलब 2000 मिलियन ईयर्स एगो। एंड द ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोट, दैट इज फ्री लिविंग एनिमल, दैट इज 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट। एनसीईआरटी में इनमें से कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक, फर्स्ट फ्री लिविंग एनिमल इन द ओशन, जब लिखा हुआ है चेक करिएगा एनसीईआरटी। ऑरिजिन ऑफ वर्ड, ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, तो ये जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। Theories of origin of life. Number 1, theory of special creation. Theory of special creation. मैं एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूं आपको। Theory of special creation, it is actually proposed by फादर सुरेश। फादर सुरेश इसको प्रपोज किए थे, एंड इनका कंडीशंस क्या था? कंडीशंस था द लाइफ इज क्रिएटेड बाय गॉड approximately 4000 years ago. 4000 years ago, first life form was, as per the God, the supernatural power who created this, and that is within 6 days. Everything has been formed by the God within 6 days. Second point, all life formed from a material, मतलब एक चीज से तो बनेगा ना, उस चीज का नाम क्या था, उस स्ट्रैंड्स का नाम क्या था? ना मैटेरिया प्राइमा। इसका मीनिंग क्या पता है? प्राइमा मतलब प्रिमिटिव, मैटेरिया मतलब मटेरियल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज primitive material, and this primitive material is called as materia prima. Next point, no modification or change, no modification or change of life stems from origin. ये बोलते हैं कि जब से origin हुआ है तब से लाइफ का कोई चेंज नहीं हुआ है, लाइफ का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो फादर सुरेश के हिसाब से इवोल्यूशन नहीं हुआ है। 4000 years ago हार्ट फॉर्म हुआ था, लाइफ फॉर्म हुआ था within 6 natural days by the supernatural power God, and since from the life form there is no modification or change. क्लियर है? ये था सुरेश, स्पेशल क्रिएशन को सपोर्ट किए थे, एंड ये रिजेक्टेड है कि एक्सेप्टेड है? रिजेक्टेड, सब रिजेक्टेड है।
Next, we are coming to the theory number 2, the theory of spontaneous creation. क्या लास्ट में मॉडिफिकेशन लिखो ना. No change since from the origin of life. Number 2, spontaneous origin of life, जिसको हम लोग अदरवाइज बोलते हैं abiogenesis theory. Spontaneous origin of life or abiogenesis theory of life. It is proposed by von Helmont. It's proposed by von Helmont, and what he told is the living is formed from non-living. Spontaneous. लिविंग से नॉन लिविंग बनता है कि नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है. यहाँ पे नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है. सो लिविंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जैसे कि ये बोलते हैं कि रोटेन मीट से बनेगा हाउस फ्लाई. ठीक है, जैसे कि बोले कि वो मैनुअर से बनेगा सपोज टू बी व्हाट ना डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर्म्स. जैसे कि मर्ड से बनेगा यो दैट इज मर्ड पप्पी. मर्ड पप्पी एक टाइप का क्या है ना, एम्फीबिया है. नेक्चुरस उसको बोलते हैं, आप लोग पढ़े हैं एम्फीबियंस. जैसे कि सॉइल से बनता है आर्थवॉर्म. जो देखे वो बोले. हम लोग ऐसे मिट्टी खोदेंगे तो आर्थवॉर्म निकलेगा, लेकिन क्या मिट्टी से आर्थवॉर्म बनता है? रोटेन मीट को रख देंगे तो धीरे धीरे सड़ेगा, धीरे धीरे हाउस फ्लाई अट्रैक्टेड होके आएंगे, वहां पे बैठेंगे, खाएंगे, वहां पे अंडे भी देंगे. तो क्या हाउस फ्लाई फॉर्म फ्रॉम रोटेन मीट? मैन्युअर जो होता है, जो डिकम्पोज्ड जो ग्रेन्यूल्स होता है, डिकम्पोज सब्सटेंसेस होता है. मैन्युअर्स तो समझ रहे हैं आप लोग. वहां पे अगर आप देखेंगे तो वॉर्म तो छोटा छोटा कीड़ा रहता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इट इज व्हाट दे सी टोल्ड इट कि नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है. तो ये रिजेक्टेड है कि सपोर्टेड है? रिजेक्टेड. नंबर 3, बायोजेनेसिस. Biogenesis theory, it is proposed by 3 scientists: Francisco Redi, Lazarus Palangeni, and Louis Pasteur. तो फ्रांसिस्को रेडी, लाजरस पैरेंजेनी एंड लुइस पैस्चर, ये तीनों सपोर्ट किए थे बायोजेनेसिस को एंड आल्सो रिजेक्टेड एक्सपेरिमेंटली द एबायोजेनेसिस. एबायोजेनेसिस थ्योरी क्या बोला था आपको कि नॉन लिविंग से लिविंग. ये एक्सपेरिमेंट करके इस थ्योरी को रिजेक्ट किए. तो हु रिजेक्टेड ना? Francisco Redi, Lazarus Palangeni, Louis Pasteur. These 3 scientists experimentally rejected which theory? Abiogenesis theory. क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? तब वो बोले कि लाइफ फॉर्म्ड फ्रॉम
pre-existing life. लिविंग फ्रॉम लिविंग की लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग? ये क्या बोले ना, लिविंग फ्रॉम नॉन है, लिविंग फ्रॉम लिविंग, लाइफ से लाइफ बनता है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता है। तो ये रिजेक्ट किए एबायोजेनेसिस एंड सपोर्ट किए बायोजेनेसिस। तो कैसे एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। पहले मैं रेडी एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एंड लुइस पैस्चर, ये दोनों एक्सपेरिमेंट आप सपोर्ट करेंगे, स्पैलेंजन एक्सपेरिमेंट स्किप करेंगे। तो पहले रेडी एक्सपेरिमेंट में आते हैं। दिस इज द टू ग्लास जार, ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक मीट पीस था। So fried meat piece is to be given in both jar A and in the B. A को वो ओपन करके छोड़ दिए, B को वो क्लोज कर दिए, and it is closed by what? Now closed by a parchment membrane. Closed by parchment membrane. तो क्लोज होने के बाद क्या होगा ना, कुछ दिन के बाद ये रोटेन हो जाएगा, ये तो रोटेन होगा ना। So this meat will be rotten after few days. So housefly will be attracted to come to both. ये जो housefly है, ये housefly एंट्री किसमें करेगा, किसमें एंट्री करेगा, ओपन वाले में। लेकिन क्लोज वाले में क्या क्या एंट्री कर पाएगा, क्या नॉट, क्लियर है। So that will be enter, एंड यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएगा। दिस इज द housefly. तो housefly जिस पे एंट्री करेगा वहां पे ये एग ले करेगा कि नहीं, एंड वहीं पे आपका लार्वा भी डेवलप होगा कि नहीं। एंड उस लार्वा का नाम क्या है, मैगट लार्वा। क्या उसका नाम, मैगट लार्वा। तो मैगट लार्वा विल अपीयर in the open one or the closed one. Why so? Because the housefly able to enter, able to lay the egg, and that is by the hatching of the egg gives rise to the formation of larva. Second में वो close था बोल के वो entry नहीं कर पाए, so there is no appearance of any kind of maggot, and that is the reason why he rejected that कि rotten meat से housefly बनता है। रिजेक्ट किया कि नहीं, एंड ही टोल्ड कि हाउसफ्लाई से हाउसफ्लाई बनता है, लिविंग से लिविंग, नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि हाउसफ्लाई का लार्वा का नाम क्या है, मैगट। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रांसिस्को रेडी। दूसरा वाला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
देखिए पहले वो क्या किए, पहले वो क्या किए ना, वाटर लिए, उसमें ईस्ट ऐड कर दिए। वाटर के साथ ईस्ट ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा ब्रॉथ। इस ब्रॉथ को अभी वो हीट कर दिए। हीट करने से इसमें जो ईस्ट है उसका डेथ हो जाएगा कि नहीं, करेक्ट। नाउ इट इज कॉल्ड एज हीट किल्ड सॉल्यूशन। So heat killed yeast solution he made to prepare first. वो दिखाना चाहते हैं कि मैंने ईस्ट लिया था, ईस्ट को लेके मैंने पहले हीट करके कील कर दिया, मतलब उस सॉल्यूशन में अभी कोई लिविंग नहीं है, समझे कि नहीं, नॉन लिविंग है, इसीलिए वो पहले बनाया कि हीट करके उसको किल किए। एंड दैट हीट किल्ड सॉल्यूशन इज टू बी प्लेस्ड इन बोथ, one is a straight neck, second is swan neck। हम लोग देखते हैं ना स्वान, जो जो एक्चुअली बर्ड्स है उनका नेक ऐसे पूरा ऐसे ही दिखता है कि नहीं, दैट इज व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इट इज heat killed solution given in the both। so heat killed solution to be given in the both। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे जो एयर था वो डायरेक्ट कम्युनिकेट किया कि नहीं, एयर में माइक्रोब होते हैं और विथ ईस्ट और विदाउट ईस्ट, अरे एयर में तो ईस्ट होते हैं ना, तो ये एयर का जो ईस्ट था डायरेक्टली एंट्री किया कि नहीं, कम्युनिकेट करेगा कि नहीं डायरेक्टली, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट नेक। सो आफ्टर फ्यू डेज यहाँ पे लिविंग ईस्ट अपीयर होगा कि नहीं होगा, सो आफ्टर फ्यू डेज लिविंग ईस्ट विल बी अपीयर इन द फर्स्ट वन। लेकिन यहाँ पे जो एयर है उस एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्वान ने, तो उसके वजह से यहाँ पे अपीयर नहीं होगा, नो ईस्ट, नो लिविंग ईस्ट। तो दोनों में डिस्पैरिटी आ गया कि नहीं, कि फर्स्ट में ईस्ट अपीयर हुआ सेकंड में अपीयर नहीं हुआ, तो एक्सप्लेनेशन क्या था कि जैसे ही यहाँ पे एयर कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अपीयरेंस ऑफ द ईस्ट इन द फर्स्ट वन, सेकंड में अपीयर नहीं हुआ, इसीलिए वो पहले से ही ईस्ट को किल करके रखे थे ताकि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो। एंड लोग यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन मार्क बनाने लगे, बहुत सारा क्वेश्चन आया, उनको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ इस एक्सपेरिमेंट को लेकर। तो फिर वो क्या किए ना, इस नेक को कट कर दिए, मतलब ब्रेक कर दिए। अगर ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद फिर से स्ट्रेट हो गया कि नहीं, स्ट्रेट होने के बाद यहाँ पे अपीयर होगा कि नहीं, ईस्ट अपीयर हुआ। ये जस्टिफाई किए कि as it is a swan neck, that is why the air is not in the communication directly with the solution। पर जैसे ही ब्रेक कर दिए तुरंत वो फिर से आ गया अपनी जगह पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, यो दैट इज व्हाट ना, swan neck flask experiment। लुइस पैस्चर।
तो समझ में आ गया, ये था बायोजेनेसिस थ्योरी नंबर 3। अभी हम लोग आते हैं नंबर 4 में। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। Catastrophic theory proposed by, that is, Cuvier. A huge natural calamity, and उस natural calamity को बोला गया catastrophe. A huge natural calamity will occur in regular time interval. ये बोलते हैं कि रेगुलर टाइम इंटरवल में एक बहुत ही बड़ा नेचुरल कैलामिटी होता रहता है, जिसको अपने लैंग्वेज में वो समझाया कि कैटास्ट्रोफ, which leads to killing of all life on earth. तो इस नेचुरल कैलामिटी की वजह से अर्थ में जितने भी लाइफ फॉर्म होगा सब के सब मर जाएंगे, एंड द न्यू एंड मॉडिफाइड एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग। समझे? तो ये बोलते हैं कि ऐसे बीच बीच में कैटास्ट्रोफ होता रहेगा टाइम इंटरवल में, एंड पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उनका डेथ हो जाएगा, फिर से न्यू फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ होगा, तो ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये जो बायोजेनेसिस थ्योरी था वो भी रिजेक्टेड था। व्हाई द बायोजेनेसिस थ्योरी बिकम रिजेक्टेड? क्योंकि ये सिंपली आपको एक्सप्लेन किए कि लाइफ से लाइफ बनता है। फर्स्ट लाइफ कैसे फॉर्म हुआ? Is there any explanation for this? So they just simply explain you that the life is formed from the pre-existing life. How the first life has been comes to the earth is unable to actually explain. That is why this theory is also rejected, and catastrophic theory, no doubt, it is also rejected. The number 5, cosmozoic theory. कॉस्मोजोइक थ्योरी मतलब हम बोल सकते हैं कि आउटर स्पेस। आउटर स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना? कॉस्मोजोइक। कॉस्मस का मतलब होता है स्पेस, मतलब अर्थ के बाहर जो स्पेस है ना, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं ना? कॉस्मस। तो इसीलिए उसका नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीड थ्योरी, स्पोर थ्योरी, इंटरप्लैनेटरी थ्योरी, और पैंस्पर्मिया थ्योरी। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्या एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। इट इज प्रपोज्ड बाय रिचर। He told that the life first comes from some other planet. So it is comes from some other planet in the form of seed.
और स्पोर, एंड उस स्पोर का नाम क्या था? पैनस्पर्म। तो ये बोलते हैं कि पैनस्पर्मिया a type of seed, a type of spore which is comes to the earth surface containing life from some other planet, इसीलिए उसको इंटरप्लैनेटरी थ्योरी भी बोलते हैं। और आउटर स्पेस है इसीलिए कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हैं, सीड थ्योरी, स्पोर थ्योरी और पैनस्पर्मिया थ्योरी। सो दिस इज आल्सो रिजेक्टेड, देयर इज नो प्रूफ। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसके ऊपर अभी भी फेथ बना के रखे हैं कि स्वयं समवेयर एल्स फ्रॉम द अर्थ लाइफ मे बी एग्जिस्ट। हम इसीलिए सोचते हैं कि लाइफ हमारे अर्थ को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे हो सकता है, बिकॉज लाइफ फॉर्म के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए जो कि अर्थ पे सबसे बढ़िया था। हो सकता है कि अर्थ जैसे और बहुत सारा प्लेनेट हो सकता है, हमारे एक्चुअली क्या है ना, पहुंच से बाहर है, हम लोग वहां पे पहुंच नहीं पा रहे बिकॉज वी आर सो, दैट इज व्हाट ना, डिस्टेंस फ्रॉम दैट एरिया। तो हो सकता है कि हमारे जैसे कंडीशंस किसी दूसरे प्लेनेट में होगा, सोलर सिस्टम में तो कहीं पे नहीं है अभी भी, फिर भी हम लोग मार्स में एक्चुअली लाइफ का जो है वो सर्च अभी भी जारी रखते हैं। हो सकता है कि सोलर सिस्टम जैसे और बहुत सारे सिस्टम है, वी नो इट, वी हैव द सन जो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ऐसे सन तो मिलियंस है स्पेस में, तो हो सकता है कि वहां पे भी सोलर सिस्टम हो सकता है, वहां पे भी लाइफ का ओरिजिन हो सकता है। So we still unknown about this. Anyway, as there is no full proof for any kind of evidence, that is why this is a rejected theory. Now comes to the number 6, which is the accepted theory, and that is called as chemosynthetic. Chemosynthetic theory. This is actually the accepted theory, and it is proposed by, इसको मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। It is proposed by A.I. Oparin and J.B.A. Sarden. One is belongs to Russia, Russian biochemist, and J.B.A. Sarden belongs to England. They together to form the, explain the theory called as chemosynthetic theory. Complete है? So according to this particular theory, primitive earth का जो conditions था वो reducing था कि oxidizing? Reducing था। Primitive earth condition is that is what na, reducing with free oxygen के without free molecular oxygen, that is without free molecular oxygen, that is why it is reducing, and this reducing is the most favorable condition, याद रखिए, most favorable condition for life origin। अभी मॉडर्न कंडीशन में लाइफ ओरिजिन पॉसिबल नहीं है, व्हाई सो? बिकॉज दैट इज ऑक्सीडाइजिंग। अभी जो मॉडर्न कंडीशन अर्थ का है, एटमॉस्फेयर का है, वो क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग। सो ऑक्सीडाइजिंग इज द अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, reducing is the most favorable condition for the origin of life, that is why the primitive earth has the, that is what na, conditions for the origin of life as it is reducing। and primitive earth का कंपोजिशन अगर देखें, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या होगा प्रिमिटिव अर्थ का? नंबर 1 इज
देखो ऑक्सीजन नहीं होगा, बाकी सब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, then that is your what na methane, ammonia, HCN, but no oxygen in the molecular form. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये क्या है ना, रिड्यूसिंग कंडीशन ऑफ अर्थ है कि नहीं। एटमॉस्फेयर का जो एयर का जो कंपोजिशन है दैट इज विदाउट ऑक्सीजन, एंड दिस इज द मोस्ट कंडीशंस फेवरेबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ग्रेजुअली टेम्परेचर कूल डाउन होगा कि नहीं। टेम्परेचर कूल डाउन होने से ये जो वाटर वेपर प्रेजेंट था ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा, गिव्स राइज टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म ड्रॉपलेट, एंड ड्रॉपलेट होने से क्या होगा, रेन होगा कि नहीं। Continuously. So condensation of water vapor to form the droplet which cause the rain continuously to form ocean. तो ओशन का जो वाटर है वो सल्टी है कि नहीं। Why it is salty? Now, because when the rainwater is comes to the earth surface, that rainwater also carry the dissolved minerals present in the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर में जो डिजर्व मिनरल था, क्योंकि देखिए जब अर्थ फॉर्म हुआ था पूरा मॉल्टेन था, वल्केनोस खाली खाली चारों तरफ मॉल्टेन लावा था, वही मॉल्टेन लावा का जो गैस है वही फर्स्ट आपको अर्थ का जो एटमॉस्फेयर फॉर्म किया है। सो मॉल्टेन लावा, पूरा अर्थ मॉल्टेन कंडीशन में था, गैस रिलीज हो रहा है, वो गैस पहले एटमॉस्फेयर बनाया, and that gas contains different type of minerals, different type of your water vapor, carbon dioxide, water molecule, sorry, H2, CO2, everything is present. तो धीरे धीरे कंडेंस्ड होने लगा, धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे ही कूल हुआ तो ये मॉल्टेन चेंज होके सॉलिडिफाई होगा। तो पहला जो अर्थ वो पूरा मॉल्टेन था, टेम्परेचर कूल डाउन होने की वजह से वो मॉल्टेन चेंज होके सॉलिडिफाई हुआ। तो मॉल्टेन चेंज होके सॉलिडिफाई हुआ तो वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर था वो कंडेंस्ड हो गया, एंड दैट गिव्स राइज टू रेन वाटर। एंड जब ये सॉलिडिफाई हुआ है, कहीं कहीं पे क्या हुआ है ना, डिप्रेशन है, कहीं कहीं पे एलिवेशन है, तो ये जो वाटर है वो कहाँ पर डिपॉजिट होगा ना, एलिवेटेड पार्ट में, एंड व्हेन द वाटर इज कमिंग to the surface of the earth that contains the dissolved minerals, and that is why starting से ओशन का वाटर क्या है ना, सल्टी। ठीक है, एंड आप ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास क्या प्रूफ है कि अर्थ पहले मॉल्टेन था। यस प्रूफ है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, जियोलॉजी में पढ़े हैं, ज्योग्राफी में पढ़े हैं, 10th में, कि भाई अर्थ का 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर अभी भी मॉल्टेन है कि नहीं। कोर पर जो सेंट्रल पार्ट है वो लास्ट में पूरा कूल डाउन होगा। अभी क्रस्ट मल्टेन से अभी क्या हुआ है ना, कूल डाउन होके सॉलिड हुआ है। मेंटल में और थोड़ा सा कम हुआ है कूल डाउन, तो पूरा जो कोर पार्ट है वो कंप्लीटली हॉट है अभी भी, जहां से मॉल्टेन लावा निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनोस कहां से आता है, वही कोर से ही आता है। तो ये प्रूफ है कि धीरे धीरे कूल डाउन प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है, और फ्यूचर में और भी कूलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। तो आप सोचिए कोर जब तक ठंडा हो जाएगा तो क्रस्ट का क्या हालत होगा, समझ रहे हो। कोर अगर ठंडा हो गया तो क्रस्ट का क्या हालत होगा, लाइफ विल कंप्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। लाइफ एक्सटिंक्ट होगा, 100% एक्सटिंक्ट होगा, बट अभी नहीं, फिलहाल तो अभी नहीं।
मिलियंस नहीं, बिलियंस, बिलियंस ईयर्स लगेगा लाइफ एक्सटिंक्ट होने में, होगा पक्का। तो ओशन वाटर इज सल्टी विथ dissolved minerals comes along rainwater. So along with the rainwater, the dissolved mineral comes. That why the ocean water is salty. And हम लोग पता है कि फर्स्ट लाइफ कहाँ पे फॉर्म हुआ है? ओशन में हुआ कि नहीं? पहले ओशन हुआ है, उसके बाद ही लाइफ फॉर्म हुआ है। So now हम लोग को ये पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो क्या था वो एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी सोर्स which is to be stimulate the chemical reaction. Source of energy for chemical reaction. क्योंकि अभी ओशन वाटर में क्या है? डिसॉल्व मिनरल है, मतलब इनऑर्गेनिक है। वो लाइफ में कन्वर्ट होने के लिए धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ना। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मींस केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिवोल्यूशन और केमोजेनी। तो केमोजेनी और सोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी क्या है? नंबर वन, हीट ऑफ द अर्थ, मतलब हाई टेम्परेचर। सेकेंड इज वोल्केनिक इरप्शन, थर्ड इज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग लाइटनिंग। क्योंकि रेन हो रहा है तो लाइटनिंग भी तो हो रहा है, लाइटनिंग जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी which provide during the rain is also a favorable conditions to create the first chemical reaction, to start the first chemical reaction, that is chemogeny. तो ये फैक्टर एसोसिएटेड था। अब मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं कैसे कैसे रिएक्शन हुआ था। देखिए, मोल्टेन लावा था, हमने बात किया अभी। मोल्टेन लावा से गैस रिलीज होगा कि नहीं? What are the gas to be released from the molten lava? Now, mostly methane, ammonia, carbon dioxide, and hydrogen. Sorry, water, vapor. ये प्रेजेंट था किसमें ना? molten lava से जो गैस रिलीज हुआ था। And the water molecule which is present, हम लोग पढ़े हैं केमिकल केमिस्ट्री में, आप लोग पढ़े हो कि UV rays made the breakdown of the H2 and O. तो ये nascent oxygen रिलीज हुआ, and that nascent oxygen gradually will form the ozone layer, that is O3, है कि नहीं? तो O3 फॉर्म जब तक नहीं होगा तब तक यूवी रे तो आता रहेगा ना। तो
जैसे ही ओजन बन गया ये एक टाइप का शील्ड हो गया. सो दैट शील्ड विच प्रोटेक्ट, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि यूवी रे जो होता है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन से, पढ़े हैं कि नहीं? तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन को पहले रोकना पड़ेगा, शील्ड बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये म्यूटेशन करेगा बार बार. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए कितना सिस्टमैटिकली हुआ वो ये सब चीज. इजी नहीं हुआ है, इतना इजी नहीं प्रोसेस था, बहुत ही स्लो प्रोसेस था, सिस्टमैटिक था. पहले शील्ड बना, ओजोन लेयर, यूवी रे को प्रोटेक्ट किया, यूवी रे प्रोटेक्शन होने के बाद लाइफ स्टार्ट हुई, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ. देखिए स्टेप्स बता देते हैं. फ्री एटम, gives rise to simple inorganic molecule and compound. First simple organic compound. सीक्वेंस हम बता रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट फ्री एटम में क्या था ना, हाइड्रोजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, ऑक्सीजन था, सल्फर था. ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है. देन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो बना दैट इज, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, हाइड्रोजन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल हुआ, NH3 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ. दीज आर द सिंपल इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक, inorganic. Then I have first simple organic. First simple organic में देखिए जैसे कि मीथेन एंड हाइड्रोसियानिक एसिड. उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड. फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए डिफरेंस देखिए. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आ गया ना, सिंपल शुगर. सिंपल शुगर मीन्स व्हाट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड. क्लियर? नेक्स्ट अमाइनो एसिड, नेक्स्ट ग्लिसरॉल, नेक्स्ट फैटी एसिड, नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेसिस, ये सब फॉर्म हुआ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर. देन दैट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आ जाएगा, द कॉम्प्लेक्स शुगर, then amino acid gives rise to formation of what na, protein. Glycerol fatty acid gives rise to what na, lipid. Nitrogenous base, simple sugar, ये सब मिलके क्या बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे कि नहीं? न्यूक्लिक एसिड जैसे कि DNA एंड RNA. Now this complex organic compound gives rise to the formation of, that is, protobiotes. Proto means ancient, pro means क्या है, ancient, bio means living. मतलब ये ancient life है कि that is primitive life है कि ये modern life है? Primitive life, primitive और ancient life. तो primitive और ancient life में फर्स्ट जो बना था वो था प्रो, that is coacervate and microsphere. Coacervate and microsphere. तो these are the two different type of primitive life और protobiotes. हम इसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे.
and these are found in the sea water. नेक्स्ट इज प्रोटोबायट के बाद क्या हुआ है, इवोल्यूशन में दिखा रहा हूं, देखिए सिंपल टू ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स हो रहा है। नेक्स्ट था यूओबायोट। यूओबायोट मींस द फर्स्ट ट्रू लाइफ। फर्स्ट ट्रू लाइफ मतलब आप कोआ सेलिब्रेटेड माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या बोलेंगे, इज इट ए लाइफ एक्चुअली? सो इसीलिए कोआ सेलिब्रेटेड माइक्रोस्कोप को हम लोग लाइफ ट्रीट नहीं करते, दे आर नॉट द फर्स्ट लाइफ। द फर्स्ट लाइफ कौन है, यूओबायोट। एंड यूओबायोट के बाद आ जाएगा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स चेंज होके बनेंगे यूकैरियोट्स। इसके बीच में भी बहुत सारा है, मैं तो कल एकदम टू दी पॉइंट बता दिया। ऐसा नहीं कि लाइफ एकदम सडनली प्रोटोबायट से यूबायट हो गया है, प्रोकैरियोट हो गया, यूकैरियोट हो गया। इट इज नॉट सो सिंपल एज इट इज सीन। ये सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड यूबायट एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में पता नहीं मिलियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल होगा। हम एक सिस्टमैटिकली बोल दिए कि ऐसे ऐसे हुआ है। समझ में आया कि नहीं? ना देखिए ओशन वाटर में अभी क्या है, मतलब हम स्टोरी के बारे में पूछ रहे हैं। ओशन वाटर में क्या है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा कि नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे ऑलरेडी सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो चुका है। नाउ दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट ना, कॉम्प्लेक्स शुगर, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। एंड ओशन वाटर थोड़ा सा गर्म भी होगा या ठंडा होगा? गर्म भी है, लिक्विड भी है, सॉल्टी भी है। It is treated as what na hot dilute soup. और clean soup. हम लोग सूप पीते हैं ना, सूप गर्म होता है कि ठंडा होता है, सॉल्टी होता है? The name of ocean given by Harden. The name of ocean given by Harden is hot dilute soup. क्या है ना, डाइल्यूट भी है, हॉट भी है एंड सल्टी भी। That is why it is called as hot dilute soup. The first origin of life कहाँ पे हुआ था, hot dilute soup में। वही बोलने के मतलब है कि हाल्डेन ने क्या बोला। हम नेक्स्ट क्लास में गॉस सेलिब्रेटेड माइक्रोस्फीयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, माइक्रोस्फीयर। Then I will start the process of, that is evidences in favor of evolution.